Assalamualaikum to all my YouTube family. Hope you all are doing great. Today I'm gonna make yummy chicken tikka rice platter. So let's check out the video. I'm using 4 to 5 chicken breast pieces. Let me tell you one thing, that whenever I order chicken, I always add chili flakes and vinegar in it before freezing. So it's entirely up to you if you want to use frozen chicken or if you want to use fresh chicken. इसके अलावा we need dark soya sauce, salt, chicken tikka. मैं यहाँ पर शान का chicken tikka यूज़ करूँगी. And we need lemon juice. इसके अलावा हमें 4 garlic cloves चाहिए और half piece ginger and half teaspoon red chili powder and 1 teaspoon all spices powder and 1 teaspoon white pepper and 1.5 teaspoon black pepper मैं चिकन के अंदर ऐड करूँगी और इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी. एज़ यू कैन सी मैंने चिकन के स्मॉल क्यूब्स कर लिए हैं. अब मेरे पास जो जिंजर और गार्लिक है इसे मैं अच्छी तरह से मोटर एंड पेस्टल में स्मैश कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी सारे स्पाइसेस के साथ. नाउ आई एम गोना ऐड 4 टेबलस्पून योगर्ट. सब चीज़ों को अच्छी तरह डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एंड 30 मिनट्स में मैरिनेट कर दूँगी. मैं जिंजर और गार्लिक को स्मैश करने के वक्त सॉल्ट ऐड कर चुकी हूँ, तो अब मुझे सॉल्ट इसमें ऐड करने की नीड नहीं है क्योंकि चिकन टिक्का पाउडर के अंदर भी सॉल्ट होता है, तो वी डू नीड टू ऐड सॉल्ट मोर. ओके, बट इफ़ यू थिंक कि सॉल्ट कम है तो यू कैन ऐड मोर सॉल्ट, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड. चिकन मैरिनेट हो चुकी है, 30 मिनट्स हो गए हैं. नाउ वी नीड 1 मीडियम साइज अनियन जो कि मैंने ऑलरेडी कट कर ली है. पैन के अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और अनियन को फ्राई करूँगी until it gets light brown. यमी चिकन टिक्का राइस प्लेटर इज़ रेडी. आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी. इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल.